हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिज़ाइन कंसिस्टेंट डॉट नेट मॉवी XML पेजेस बाय यूजिंग शेयर रिसोर्सेस। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में क्रिएट मल्टी पेज डॉट नेट मॉवी एप्स विथ टैब एंड फ्लाईआउट नेविगेशन। यूज द डॉट नेट मॉवी शेल टू क्रिएट मल्टी पेज एप्लीकेशन विथ टैब्स एंड फ्लाईआउट नेविगेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से part of planning your application's architectures is designing how the user moves between pages. Should users go forward and backward through a sequence of pages? Does your app have one start page, or there are several top level pages that you are equally important? Okay, pages that are equally important. Your choice of navigation must work with your app's content. It should also feel native to each platform you target. Suppose you are writing an app for planetarium by using .NET multi-platform app UI. You want to generate interest in astronomy by presenting astronomical facts and concepts that are relevant to everyday life. The app should have pages covering sunrise and sunset, lunar phases, astronomical bodies, and about page. Your job is to design and implement an intuitive navigation pattern for these pages. In this module, you learn how to use tab page to implement an app that presents data on multiple pages. You learn when this navigation pattern is appropriate and how you can customize the behavior of tabbed pages. You also learn how to combine tabbed page with navigation pages that uses the navigation stack. तो यहाँ बहुत कुछ लर्निंग है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे फ्लाई आउट नेविगेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे टैब नेविगेशन इम्प्लीमेंट करते हैं और नेविगेट कैसे करते हैं पेजेस विथ टैब पेजेस के साथ, या पेजेस और टैब पेजेस के बीच में कैसे नेविगेशन करते हैं। तो डेफिनेटली शेल भी हम जानेंगे, क्योंकि शेल के थ्रू हम फ्लाई आउट करेंगे, शेल के थ्रू ही हम टैब नेविगेशन करेंगे। सो नेक्स्ट यूनिट है इम्प्लीमेंट फ्लाई आउट नेविगेशन। सो फ्लाई आउट नेविगेशन इज अ टाइप ऑफ नेविगेशन। इफ समवन विल आस्क यू, बोलता है कि फ्लाई आउट नेविगेशन क्या है, तो आपको बोलना है फ्लाई आउट नेविगेशन इज अ टाइप ऑफ नेविगेशन where a window of menu items slides or flies out from the side of the device's screen. Okay, this is side of the device। ये पूरा एक डिवाइस है, उसके साइड से एक फ्लाई आउट स्क्रीन क्या होता है, बाहर आता है, comes out. Okay, so flight out navigation is a type of navigation where a window of menu items, this is the window of menu items, okay, slides from the side of the device screen. It's invoked by tapping on hamburger icon। एक hamburger icon होता है। Let me check here is any open in, okay, इसको टैप किया तो ये बिल एप्लीकेशन है, that's fine। to we have another one, okay। तो इस पे हैमबर्गर आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। हैमबर्गर आइकॉन पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये दिस इज़ कॉल्ड हैमबर्गर। हैमबर्गर की तरह दिखता है, 3 लेयर है ना, तो एक ऐसा लगता है ये क्या है, एक व्हाट वी कैन से कि एक वो इसके अंदर में स्लाइसेस वेजिटेबल हैमबर्गर है, ठीक है, बर्गर का वो है डिज़ाइन, तो इसलिए इसको हैमबर्गर बोला है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, द फ्लाइड आउट मेन्यूज, ओके लेट मी डू दैट हियर हैमबर्गर, इट इज़ इन्वोक्ड बाय टैपिंग ऑन हैमबर्गर menu, okay, it is invoked by tapping on hamburger menu, an icon with 3 horizontal line. The icon is 3 horizontal line stacked on top of each other, okay। So once you tapped it, that window is comes out
from the side of the devices. That is called fly out. Okay, fly out navigation. Okay, what is fly out navigation? Okay, so fly out navigation display a menu. Okay, fly out navigation display a menu that provides a quick means to switch context within your application. यदि मैंने सपोज करो डोमेस्टिक को क्लिक किया सो दैट विल टेक यू टू द डोमेस्टिक पेज. ओके, बियर्स को किया तो इट विल मूव टू द बियर्स पेज विद द image and description of that animal. The fly out page is composed of several parts. Okay, उसमें क्या क्या होता है फ्लाई आउट पेज में? सिर्फ एक लिस्ट नहीं होता है, उसमें एक हेडर होता है. इसको बोलेंगे फ्लाई आउट आइटम्स, जहाँ पे हम आइकॉन और टेक्स्ट को शो कर रहे हैं. दैट इज़ फ्लाई आउट आइटम्स, मेन्यू आइटम्स. ओके, व्हाट इज़ मेन्यू आइटम्स? दोनों एक ही है एक प्रकार से देखा जाए तो. ठीक है, तो मेन्यू आइटम्स एंड फुटर. तो हेडर फुटर दो चीज़ होती है. फ्लाई आउट आइटम्स और मेन्यू आइटम्स दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम अलग अलग है. ठीक है. The following image shows a visual example. Okay, fine. Because the flyout menus isn't always visible. Okay, ये कह रहे हैं कि flyout menus नहीं दिखता है. It can be used to switch context between conceptual different parts of your application. For example, one flyout item can lead to data entry and another to be about the page. Okay, तो हो सकता है कि we'll see what we can see later. Flyout navigation in .NET MAUI app. You use the flyout item class to implement flyout navigation. अब यदि इसको implement करना है तो we have to use the flyout item. किसके अंदर? शेल के अंदर. ठीक है, शेल के अंदर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? flyout item. Okay. You use the flyout item class to implement flyout navigation in .NET MAUI. Flyout item is a part of Shell app, SHELL, Shell app development paradigm provided by .NET MAUI. Navigation with a flyout in .NET MAUI occurs when a flyout item is tapped. The flyout item automatically switches the content displayed in your app. You specify what gets displayed when a flyout item is tapped by setting its cell content. Okay, property. That property points to a page in your application. Okay, the flyout needs to be hosted in a cell page which serve as your application main page, and you can have as many flyouts like as you would like. The following example creates a flyout containing two flyouts items. ठीक है, अभी ये जो है कोड एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या क्रिएट किया है? फ्लाई आउट कंटेनिंग टू फ्लाई आउट आइटम्स. पहला है फ्लाई आउट आइटम्स 1, जिसमें है टाइटल कैट एंड आइकॉन है कैट PNG. ओके, कैट कहाँ पे दिख रहा है? कहीं होगा. लेट्स सपोज ये कैट है और कैट का आइकॉन है. ठीक है, और उसके अंदर हमने बनाया है फ्लाई आउट आइटम के अंदर टैब. उसमें डाला है शेल कंटेंट. कंटेंट टेम्पलेट है कैट पेज का. व्यूज़ कहाँ से आ रहा है? उस नेम स्पेस से आ रहा है, जो भी क्लास है, जो भी दैट्स अ प्रोजेक्ट नेम. प्रोजेक्ट के अंदर जो व्यू है, व्यू फोल्डर के अंदर कैट्स पेज है, उसको हम पास करें कहाँ पे? शेल कंटेंट में. शेल एक पेज है, शेल के अंदर आपको जैसे कंटेंट पेज होता है राइट, वैसे ये शेल है. शेल के अंदर फ्लाई आउट आइटम है. फ्लाई आउट आइटम को जैसे ही आप टैप करते हो वो कहाँ जाएगा? इट विल टेक यू टू द शेल कंटेंट. ठीक है, same for dog, shell content. Create a flyout. One or more flyout items can be added to flyout. Okay, कई सारे flyout item हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, a flyout item object represent each flyout item. Each flyout item object should be a child of subclass cell object that serve as your app's main page. Okay, the shell object has implicit conversion operators that enable the shell visual hierarchy to be simplified. This simplification is possible because a subclass cell object can only
ever contain flyout objects or a tab bar object, which can only ever contain tab object, which can only ever contain shell content object. ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्या, शेल ऑब्जेक्ट जो है इम्प्लिसिटली स्वतः ही कन्वर्ट करता है किसको, स्वतः ही कन्वर्ट करता है. सेल ऑब्जेक्ट हैज़ अ इम्प्लिसिट कन्वर्शन ऑपरेटर. ओके, दैट इनेबल द सेल विजुअल हायरार्की टू सिंप्लीफाइड. वो खुद कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, दिस सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज सब क्लास सेल ऑब्जेक्ट कैन ओनली एवर कंटेंट और टैब बार, या तो या कंटेंट कंटेंट फ्लाई आउट आइटम या टैब बार. ठीक है, दिस सिंपली implicit conversion operators can be used to remove the flyout and tab objects from the previous example. Let's suppose, okay, here cell content. Okay, this is shell page. Inside we have a sub child of inside we have a child of shell is cell content. इसमें जैसे हमने फ्लाई आउट डाला फिर टैब डाला, इसमें डायरेक्ट हमने कॉल किया है सेल कंटेंट, और उसके अंदर हमने लिख दिया है टाइटल्स एंड आइकॉन एंड कंटेंट टेम्पलेट, तीनों चीज़ सेल कंटेंट के अंदर. फ्लाई आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है, टैब लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्यों, क्योंकि इम्प्लिसिट कन्वर्शन ऑपरेटर्स है किसके अंदर, किसके अंदर है, शेल ऑब्जेक्ट के अंदर. तो वो खुद ही क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा. तो टाइटल आइकॉन कंटेंट टेम्पलेट, सेम फॉर वन मोर टाइटल आइकॉन कंटेंट टेम्पलेट. यदि आप देखोगे तो अब ये इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, दिस कोड रिजल्ट इन अ फ्लाई आउट with two items. The cat page is displayed by default when the app opens. Tapping on the second display the dog pages. Flyout menu items. Menu items can be optionally added to the flyout. Okay, menu items can be optionally added to the flyout. A menu item object represents each menu item. Menu items are similar to buttons in that tapping one leads to an action to occur rather than a page to display. The position of menu items object on the flyout is depend upon their declaration order in the cell visual hierarchy. Therefore, any menu items object declared before flyout items object will appear before the flyout object in the flyout, and menu items object declared after flyout item object will appear after the flyout object in the flyout. यहाँ पे समझना कि the position of menu item object on the flyout is depend upon their declaration order. ठीक है, यदि डिक्लेरेशन ऑर्डर जैसे कि फ्लाई आउट आइटम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया आपने फ्लाई आउट आइटम ऑब्जेक्ट अपेयर होने के बाद, तो क्या होगा कि फ्लाई आउट विल अपेयर, इट विल बी, तो क्या होगा, तो फ्लाई आउट आइटम विल अपेयर बिफोर द फ्लाई आउट ऑब्जेक्ट इन द फ्लाई आउट्स. तो वैसे ही आफ्टर सीक्वेंस इस मैटर. जैसे कि शेल है, शेल के अंदर हमने एक मेन्यू आइटम लिया. ठीक है, द पोजीशन ऑफ मेन्यू आइटम. ठीक है, हमने एक टेक्स्ट लिखा हेल्प, आइकॉन इमेज डाला, आइकन इमेज सोर्स हेल्प डॉट पी एन जी, कमांड हेल्प कमांड, कमांड पैरामीटर्स डाल दिया. अब सीक्वेंस हमने जो कुछ भी लिया जैसे फ्लाई आउट के बाद डाला. ओके, यहाँ पे वही समझाने की कोशिश की कि मेन्यू आइटम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड बिफोर फ्लाई आउट ऑफ द फ्लाई आउट आइटम ऑब्जेक्ट विल अपेयर बिफोर द फ्लाई आउट आइटम ऑब्जेक्ट इन द फ्लाई आउट. यदि यहाँ पे यदि आपने पहले लिखा तो पहले आएगा हेल्प, पहले आएगा, फिर मंकी एलिफेंट स्पीयर बाद में आएंगे. यदि आपने इसके बाद में लिखा तो ये हेल्प बाद में आएगा, फ्लाई आउट आइटम्स पहले डिस्प्ले होगा फिर मेन्यू आइटम्स. ओके, menu items. Fly out header and footer. The fly out header is the content that optionally appears at the top of the flyout. You define the appearance of the header by setting an object by the shell.flyoutHeader binding property. shell.flyoutHeader grid के अंदर image. ठीक है, the fly out footer is the content that optionally appears at the bottom of the flyout. You define the appearance of the footer by setting an object with the shell.flyout footer bindable property.
तो कुछ नहीं है खास इसमें। सेल डॉट फ्लाई आउट हेडर, उसके अंदर एक ग्रिड बना दिया, ग्रिड में इमेज डाल दिया, दैट्स बिकम द हेडर। सेम फॉर द फ्लाई आउट फुटर, we have a shell dot fly out footer, inside we have a tag grid controls, inside again we have a view image, उसमें डाल दिया, that's a footer। okay, so next यूनिट में हम पढ़ेंगे implement flyout navigation। तो सबसे पहले क्या करना है, flyout navigation हमें बनाना है। तो इसमें दिया है कि go to the exercise 1, जो कि एक्सरसाइज रेपो में है। ओके, उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी डॉट एसएलएन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में सॉल्यूशन है, करेक्ट, एसएलएन है। फिर द सॉल्यूशन एक्सप्लोर विंडो में अबाउट पेज, मून फेज पेज एंड सनराइज, 3 पेज है इसके अंदर। विल गो एंड चेक पेजेस। मून है, अबाउट है, सनराइज है, करेक्ट। बिल्ड एंड रन दैट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्रॉस ऑल पेजेस, हम पेजेस के अंदर में 3 पेज बनाएंगे। पहला पेज का नाम रखेंगे अबाउट पेज। दिस इज अबाउट पेज। कंटेंट पेज, क्लास, टाइटल, दैट्स फाइन। टाइटल को लिख देंगे अबाउट कंटोसो एस्ट्रोनॉमी, और उसके अंदर हमने डाल दिया स्टैक लेआउट। अभी पुराना कोड है, स्टैक लेआउट से बना हुआ, चलेगा, हमें सिर्फ फ्लाई आउट पढ़ना है, सो वी कैन इग्नोर दिस। कोड बिहाइंड में कुछ नहीं है। सेम फॉर मून फेस पेज, जल्दी से बना लेते हैं इसको भी। बैकग्राउंड कलर ब्लैक। कंटेंट पेज हमने पढ़ा था रिसोर्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे डेडिकेटेड रिसोर्स फाइल बनाई हुई है। ठीक है, ये भी हो गया। कोड बिहाइंड है कि इसमें सेट डालना पड़ेगा। ठीक है, कोड बिहाइंड, yes we have multiple things। क्या कॉपी पेस्ट, कंटेंट पेज है, नेम स्पेस है, लुक्स गुड। सनराइज पेज, दिस इज सनराइज पेज। सनराइज पेज के अंदर विल ऐड द टाइटल। ठीक है, कंटेंट पेज, स्टिक लेआउट, yeah, this is done। Now back to, go to the platforms, there is no platform specific code। we'll go to asset, asset करके है रिसोर्स के अंदर fonts, we are not going to take any new, okay we have a multiple asset।
Moon PNG we have to download. Question PNG is also required. Sun PNG is also required. Okay, colors I think it's same. Styles so is also same. App icon dot svg not required. API config not required. App.xml not required. xml.cas just a minute. xml.cs that's fine. Okay, यहाँ पे ऐड करना है app.xml.cs. Okay, this is fine. Component, so we'll comment this code. Paste this shell. Okay, कंटेंट टेम्पलेट में देखिए शेल है, शेल कंटेंट है, फिर उसमें हमने डाल दिया है ओके शेल कंटेंट कमेंट कर दिया है ठीक है. Utilize astronomy ठीक है that's fine. That's fine. Sunrise service, we have a service also. Okay, we create one data के अंदर let long है ठीक है. उसके लिए हमारे पास है सर्विस. ये आ गया इंटरफेस में और ये आ गया सर्विस में. दैट्स फाइन. अभी के लिए हम क्या करते हैं कि सर्विस के अंदर हम इसे डाल देते हैं एज अ क्लास ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेस है. इंटरफेस एंड टास्क को कॉपी कर देते हैं. एक सर्विस क्लास बनानी है जो क्या करेगी, ओवरराइड करेगी, जो इम्प्लीमेंट करेगी किसको, आई लेट लॉन्ग सर्विस को. फाइन. एक मून फेस कैलकुलेटर बनाना है. दैट्स अ स्टैटिक क्लास. एक सनराइज सर्विस है. जेसन सीरियलाइज हमने यूज़ किया है, इसका मतलब हमें सिस्टम टेक्स्ट डॉट जेसन का यूज़ करना है. ठीक है, सनराइज सनसेट एपीआई
perfect. अब इसको looks like everything is good. Let me check here. Moon phase, is there any issue? Moon phase calculator. Anything else? Sunrise. About page, that's fine. That is also fine. That is also fine. Service is also good. Might be null. And data. So issue with it. Data might be null. We have a total 3 pages. One is about page, one is moon phase page, one is sunrise. Okay, we have service also, let long interface, which is going to implement under let long service, through which we are getting the request location and we are getting let long, and we return that. Moon phase calculator, so we have a phases. Okay, and we have a some calculation. Okay, we are passing using these phases. We have a one more called सनराइज सर्विसेज. ठीक है, अब इसको एक बार रन कर लेते हैं ऐप को. सो आप देख सकते हो कि मून फेज जो था ऐप डॉट जैमल डॉट सी एस के अंदर, ओके, हमने ऐप डॉट जैमल में क्या लिखा हुआ है यदि आप देखेंगे तो वी कॉल दी ऐप शेल. ऐप शेल के अंदर जो हमने शेल कंटेंट डाला है वो है मून फेस पेज. तो ये मून फेस पेज दिखा रहा है. ठीक है, और पेजेस में जाके मून फेस पेज को देख लेते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव अ ग्रिड. ठीक है, ग्रिड के अंदर हमारे पास 4 रो 4 कॉलम है. ठीक है, एक इमेज हमने डाल रखा है स्टार्ट फील्ड पीएनजी. ठीक है, फिर स्टैक लेआउट है, उसके अंदर हमारा क्या है कि मून फेज आइकॉन एंड टेक्स्ट है. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 4 और आइकॉन एंड इमेजेस है. तो ये 4 कॉलम है. ठीक है, now what we have to do is, let me stop this, back to this portal. तो हमने अभी तक इतना बनाया, मून फेज बनाया, उसमें हमने ऐड किया शेल फ्लाई आउट को. ओके, जस्ट अ मिनट, इस कोड में थोड़ा सा चेंज है मेरे ख्याल से. एक कोड 4 साल पुराना है. बैक टू दिस एक्सरसाइज 1. Exercise 3 is also old. Shell.saml old page. Header and footer we have. Let me paste this. अब इसको रन करते हैं. इसमें इशू क्या है, पेजेस डॉट. लेट मी रन अगेन. कि ये पेज हमारे पास नहीं है. तो इस पेज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पेज के लिए गो टू दी पेजेस.
to create this page. So the page, content page, paste this. Format.png resource images, format.png downloads, starfill.png. Okay, let me upload all these images. पहले मैं नहीं ऐड किया था, हमने इसमें ऐड करना पड़ेगा सब इमेजेस को. ओपन फोल्डर, नॉट न्यू फोल्डर, travel in find travel in फोल्डर. जितने भी डाउनलोड में इमेजेस हैं की both. Let me check question copy. Question, okay. Rename that. This is question. This is also question. Which one I have to take? Any one of them is fine. Let me remove this. Let me rename this question 1 and let me rename back to this question. Okay, run this application again. .xml.cs, that's fine. Still we have some issue, I believe. Let me run again. Astronomical body. Where is this? Side this. Here we have some issue. Astronomical body. It might be inside the data, I believe. Okay. Copy this. Paste into the. This looks like a model for me. So I will create a new class and paste this value. Then
Let long service moon calculators flow our system data. We don't have this. Let me copy this. This is data service. Data we can put inside the model. Services. Services. Mhm. No, it will work. Okay, sunrise service is there. Yes, sunrise service, weather service. Let me run this. Still one issue. Body page.xml. Body page.xml. What's the issue is here? Paste. Now check. This is bodies. That's fine. This is content page. Okay. Here is the problem is we have two body and body pages. So this is the body page. Okay. This is the body page. So this is the body page. Content page to create paste and .xml.cs. Paste. Okay. This is done. This is done.
Create one more page. Paste this. Okay, let me run this application again. Looks like it's working now. So थोड़ा weird है देखने में. Nice. एरर आया है आपको. परमिशन एक्सेप्शन. Okay, stop this. Permission exception means go to platforms, iOS, info playlist, copy and paste under this info playlist. Run the application again. तो ये क्या है कि टैब है अंदर में. एक मोन एक टैब है. ठीक है. डिलाइट एक टैब है और दिस इज वन टैब. अलाउ. इसमें सनराइज आ रहा है. डिलाइट आ रहा है. दिस इज moon. Moon is not linked, I think. Yeah, moon is linked. You can see the moon. This is daylight and this is earth. Okay. Moon phase, sunrise phase. And this is astronomical body space. तो एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट समझना है तो काफ़ी इजी तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ. तो लेट मी एक्सप्लेन क्विकली हियर. ओके. तो हमारे पास एक XAML पेज है. सॉरी, हमारे पास एक .NET MAUI एप्लीकेशन है जिसमें
पेज है, मॉडल है, प्लेटफॉर्म है, रिपोजिटरी, रिसोर्स, सर्विस, फ्यू मॉडल्स है, ये मैंने बता चुका है एक क्लास में। ऐप डॉट जैमल जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है एप्लीकेशन का, जो ऐप को स्टार्ट करता है। जैसे ये हिट होता है, कहाँ से हिट होता है? प्लेटफॉर्म के अंदर से। प्लेटफॉर्म के अंदर में एक इनिशियल क्लास होती है, जो मेन क्लास होती है, जहाँ से क्रिएट मॉवी हिट होता है। और क्रिएट मॉवी लिखा कहाँ है? मॉवी है प्रोग्राम के अंदर में। मॉवी प्रोग्राम से फिर ऐप हिट होता है, ऐप डॉट जैमल डॉट सी एस, ठीक है। ऐप डॉट जैमल डॉट सी एस, और ऐप डॉट जैमल डॉट सी एस के अंदर है क्या? उसके अंदर है ऐप शेल, जहाँ से पेज कनेक्ट होता है। पेज ऐप शेल क्या है? एक नेविगेशन, एक शेल क्या है ऐप शेल की? यदि हम बोलें इन सिंपल वर्ड, व्हाट इज ऐप शेल? तो सिंपल वर्ड में क्या होगा? एक क्या है? एन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न and specific layout components used to build fast structure application, ठीक है। ये बोल सकते हैं इन डॉट नेट मॉवी के टर्म्स ऑफ यूज से यदि बोलना है तो अ सिंगल प्लेस टू डिस्क्राइब एन ऐप विजुअल हायरार्की हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स नेविगेशन लाइक फ्लाई आउट मीन्स मेन्यूज बॉटम tabs विथ मिनिमल कोड, ठीक है। दिस इज ऐप शेल। ऐप शेल हिट होने के बाद हमने इसमें क्या किया है? शेल है, शेल के अंदर हमारा फ्लाई आउट हेडर है, ठीक है। फ्लाई आउट हेडर है, कहाँ पे? इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। लेट मी चेक, इज देयर, नॉट, इज देयर, नॉट, इज देयर, नॉट, ओके, दैट्स फाइन, इस पे नहीं है, ठीक है। फ्लाई आउट है, फिर फ्लाई आउट के अंदर एस्ट्रोनॉमी, डे लाइट, बॉडीज़ है, और एक अबाउट। तो जो ये फ्लाई आउट आइटम आ रहा है ना, वो यहाँ से आ रहा है, फ्लाई आउट टैब। पहला आता है एस्ट्रोनॉमी, दिस इज द वन, ओके। पहला है मून फेस पेज, तो ये मून फेस पेज, फिर ये सनराइज पेज, और ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज पेज। डेटा टेम्पलेट हमने कॉल किया। क्या होगा यदि मैं इसको कमेंट कर दूँ और रन करूँ तो? तो क्या दिख रहा है? वर्जन 1.1.0.0 सनराइज प्रोवाइडेड बाय आइकॉन फ्रॉम, ओके, ये आ रहा है, ठीक है। अबाउट से आ रहा है, इसको भी हाइड कर दिया जाए तो ये अबाउट से आ रहा है। नो, दिस इज़ नॉट फ्रॉम अबाउट। कहाँ से आ रहा है फिर? हाँ, अबाउट तो लिखा हुआ है। मैं रिफ्रेश दिस, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है? पेज दिख रहा है जिसमें लेआउट बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी ऐड वन लेआउट फर्स्ट। इसको कंट्रोल जेड करते हैं, मिडिल को अंडू करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करते हैं, इसको ऑन और रीसेट, रीस्टार्ट करते हैं।
ब्लैक स्क्रीन आ रही है, मतलब इसमें कोई लेआउट नहीं है अभी। ठीक है, बैक टू दी वेबसाइट्स। तो हमने ये इम्प्लीमेंट किया है, मून फेज इम्प्लीमेंट किया है। लेट मी डू दैट दिस ऑल्सो। तो शेल है हमारे पास, करेक्ट। शेल के अंदर हम क्या करेंगे, फ्लाई आउट आइटम है, टाइटल मून फेज है, शेल कंटेंट, ठीक है। ऐड अ फ्लाई आउट आइकॉन, शेल में एक आइकॉन डाल देते हैं। ओके, दिस डिसेबल है इसलिए नहीं आ रहा है, इनेबल करो यार, छोटी सी मिस्टेक। लेट मी रन दिस। Run the application। टिप कैलकुलेटर में चला गया ये, क्यों आ रहा है टिप कैलकुलेटर? बिकॉज ऑफ दिस। स्टॉप एंड रन। इस वीडियो में कि हम फ्लाई आउट को इनेबल्ड करेंगे। ये पहले क्या था, डिसेबल्ड था, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे इनेबल्ड। तो यूजुअली हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं फ्लाई आउट बिहेवियर में। पहला ऑप्शंस होता है डिसेबल, फ्लाई आउट एंड लॉक्ड। तो हम फ्लाई आउट करेंगे और रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को। तो फ्लाई आउट ऑप्शन, फ्लाई आउट बिहेवियर इनेबल करने के बाद हमें हैमबर्गर आइकॉन दिखाई देता है, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी एक ऑप्शन होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लैंड किस पे करते हैं, पहले ऑप्शंस पे, जहाँ पे हमें एक पेज दिखता है, नीचे टैब दिखता है, टैब मून, डे लाइट, ओके, एंड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, ठीक है, ये दिखती है। दूसरा टैब है अबाउट का, तो अबाउट स्क्रीन दिखता है। तो ये कैसे हुआ, तो फिर से समझते हैं। दिस इज़ हेडर, फ्लाई आउट हेडर मून, फिर मिडिल वन इज़ फ्लाई आउट आइटम, दिस इज़ ओके। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, एस्ट्रोनॉमी दिख रहा है, ठीक है। और फ्लाई आउट आइटम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो एक अबाउट दिख रहा है। जैसे ही एस्ट्रोनॉमी को क्लिक किया तो आपको मून फेज, सनराइज एंड एस्ट्रोनॉमी क्या दिख रहे हैं, शेल कंटेंट बॉटम में दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है फ्लाई आउट आइटम अबाउट, वंस आई क्लिक ऑन अबाउट, शेल आइटम क्या होता है, शेल कंटेंट, कंटेंट टेम्पलेट अबाउट पेज में रिडायरेक्ट होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी
फ्लाई आउट। ओके, अभी क्विकली हम इसको कवर करते हैं। एडिंग आइकॉन्स, जब भी ऐड आइकॉन्स करना है तो फ्लाई आउट आइटम्स में आइकॉन ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें किया हुआ है। कोड में चेक कर रहा हूँ, टाइटल एंड आइकॉन, करेक्ट। फ्लाई ऐड ए फ्लाई आउट हेडर, तो शेल डॉट फ्लाई आउट हेडर हमने इस तरीके से ऐड किया, शेल डॉट फ्लाई आउट हेडर, ठीक है। implement tab navigation with .NET MAUI cell, we'll see. So implement tab navigation with the .NET MAUI cell. What is tab navigation? ठीक है, so tab navigation is a navigation pattern where a tab is stripped a row of touchable controls, ये वाली की बात हो रही है यहाँ पे, row of touchable controls, this is touchable controls, row of touchable controls. So tab navigation is a navigation pattern where a tab strip, this is strip, is permanently displayed at the bottom, at the top में भी कर सकते हैं, या bottom of the screen. Tab navigation provides a mechanism for user to select between pages in multi-page app. What is tab navigation? In an app that uses tab navigation, each tab represents a specific section or page of the app. Users select tabs within the tab strip to move between content in application. As an example, the following illustration shows the use of tab navigation in iOS clock app. ठीक है, टैब नेविगेशन यहाँ पे दिया हुआ है. The icon highlighted at the base of the page enabled you to switch between the different views. This icon corresponding to tab and views are tabbed. Because the tab strip is always visible, tab navigation allows users to quickly switch between content in the app. Okay, on the mobile devices, the tab strip typically has a limited amount of space and can display only fixed number of tabs depending on the device size and orientation. The recommendation is use only 3 to 4 tabs. If you include more tabs, you are not guaranteed to have enough space to show all of the tabs on the devices. The operating system supported by .NET MAUI to allow the overflow area. This area provides more area to access tabs that don't fit on the screens. However, navigating to this overflow tabs requires extra steps by the users. Tab navigation in on .NET MAUI. You use the tab bar object to implement tab navigation in .NET MAUI Cell app. The tab bar object displays a set of tabs and automatically switches the display's content when the users select a tab. Okay, the tab bar object to implement tab navigation. Okay, the following illustration show the UI areas. तो ये है UI area. जब भी आप टैब को टैप करते हो तो कंटेंट एरिया दैट डिस्प्ले अ पेज. Okay. To use tab in .NET MAUI Shell application, create an interface of tab bar class, a child of the shell class. Then add tab object to the tab bar. Okay, this is tab. Okay, उसमें हम tab object create करते हैं. Let me do that. Okay. जैसे ही मैंने यहाँ टैब लगाया तो आपको क्या दिखा है, यहाँ पे दो टैब दिखे, एक मून और एक सनराइज, करेक्ट. तो ये कहाँ से हुआ, ये टैब बार टैब से हुआ. टैब विद अ फ्लाई आउट मेन्यू. अभी फ्लाई आउट मेन्यू का क्या है, फ्लाई आउट आइटम कैन ओपन अप टू अ पेज. ठीक है, for that I have to enable these flyout titles.
तो इसमें शेल कंटेंट दो है एंड अबाउट। Okay, now you can see there's a two icon, astronomy, about. Okay, तो एक चीज़ और समझने की बात है कि जैसे कि हमने बहुत सारा कोड लिख दिया, ये भी वही काम करता है, दिस इज़ ऑल्सो बिहेव द सेम, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिमूव दिस कोड। ओके, सिंपल, गो विथ फ्लाई आउट शेल कंटेंट, क्योंकि इम्प्लिसिट कन्वर्शन होता है उसमें, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ्लाई आउट के साथ जाओ, इससे क्या होगा कि आपको मेन्यू बार भी मिलेगा। हाँ, यदि आपको फ्लाई आउट नहीं चाहिए इस केस में, तो यू कैन गो विथ दिस ऑप्शन, ठीक है। और डिसेबल भी कर सकते हैं, इसको डिसेबल कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पेज में लैंड रहेगा, टैब वाले में अबाउट नहीं दिखेगा उस केस में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो यदि आपने इसको डिसेबल्ड किया तो सिर्फ फ्लाई आउट का दिस पोर्शन विल शो, ना फुटर दिखेगा ना अगला फ्लाई आउट आइटम दिखेगा। यदि ये पहला होता है टाइटल पहले, तो टाइटल दिखता, बाकी ये नहीं दिखता, जो भी फर्स्ट पे होता है, ठीक है। एंड फुटर इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ फ्लाई आउट, तो डिसेबल्ड है तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ओके, व्हेन अ टैब नेविगेशन अ गुड चॉइस फॉर एन ऐप, कब होता है टैब नेविगेशन इज अ गुड चॉइस? यू हैव ओनली अ few pages in your app, and the pages all have equal importance. The app pages tend to traverse from general to more specific. The app is specific requires extension. Okay, the first option is correct. Implement tab navigation. अभी नेविगेशन कैसे करते हैं, विल सी। तो मैं थोड़ा स्पीड में करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। शेल के अंदर हमने मून लगाया, ये सब तो आपको पता है। टैब, टैब बार, ठीक है, दिस इज़ टैब बार। ओके, शेल कंटेंट टू टैब, हमने टैब सेल कंटेंट। नाउ गिव द टैब टू द टाइटल, तो टैब के अंदर टाइटल एंड आइकॉन ऐड किया प्रॉपर्टीज़। ओके, सो शेल टैब बार देन टैब देन टाइटल शेल कंटेंट, तो इस तरीके से दिखेगा, दैट्स करेक्ट। Combine the tab pages with flyout. Flyout. Okay, delete the tab bar and all the childs combined on it. In its space, flyout. Set the title property. ठीक है, an icon. Shell content डाला है इसमें, ठीक है। Flyout shell content, shell content. Uh, Within that flyout item, shell content the points to about page. ठीक है। Need to help app.xml.cs, इसमें हमने इसे कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। Use tab pages with the pages on the navigation stack. Review of layouts and tab navigation with stack and routes, ये थोड़ा important है, ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। Fly out and tabbed navigation are just two ways. Okay, fly out and tabbed navigation are just two ways of enabling our users to navigate through the data presented by an app. Another technique is to use stack navigation. Each type of navigation is suited towards different types of relationship between pages. You can use stack navigation in combination with flyouts and tabs. In these units, we briefly review the differences between tab and flyout navigation and stack navigation, and then learn how to build apps that combine both techniques. So use tab pages with pages on the navigation. Review of flyouts and tab navigation. Flyout and tab navigation provide useful mechanism for enabling the users to select which page to view at any one time. The users navigates to page simply by selecting the appropriate tab or flyout item. This form of navigation is useful for data items that have a peer relationship with each other.
In the astronomy app, the sun, moon, and about page are all peers. There are no direct relationship between them. However, for hierarchy data, stack navigation might be more appropriate. Stack navigation enables two users to drill down a series of pages, where the next page in the stack provides a more detailed view of selected item of previous pages. Consider the following scenario. You added a new page to astronomy app that display astronomical bodies. You want the users to tap on the one of those a classical object and then display information about it. The page listing the astronomical bodies would be best presented in a tab. Pages are sibling of moon phase and sunrise pages. The detailed information about the astronomical body is better presented a series of steps using stack navigation. This mechanism also enables the users to return to main astronomical bodies pages by tapping back. Navigation with stack navigation. .NET multi-platform app UI shells includes a URI-based navigation experience that uses routes to navigate to any page in app. ये बहुत important topic है. Navigation with stack navigation. .NET MAUI shells includes a URI-based. पूछा जाता है what is URI-based navigation? Shell includes a URI-based navigation experience that uses routes to navigate to any page in the app without having to follow a set navigation hierarchy. ठीक है? In addition, it allows you to navigate backwards without having to visit all the pages on the navigation. कहने का मतलब आपको उसका करेक्ट एड्रेस पता है, you can route there back to the same way. यू डोंट हैव टू गो थ्रू द स्टैक, मतलब वन बाय वन लेयर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. जो स्टैक में होता है पहला एक पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर चौथे से तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसा नहीं करना है. डायरेक्ट यू कैन रीच आउट to based on URI based navigation. The cell class defines the following navigation related properties: back button behavior, of type back button behavior, an attached property that defines the behavior of back button, current item of type shell item, the current selected item, current page of type page, the currently presented page, current state of type cell navigation state, the current navigation state of cell, current of type cell or typecast alias for application dot current dot main page. इजी समझते हैं. जब भी बैक बटन बिहेवियर की बात हो, वो किसका टाइप है? बैक बटन बिहेवियर का. ठीक है. और ये क्या है? एक अटैच प्रॉपर्टी है. ठीक है, जो क्या डिफाइन करती है? बिहेवियर ऑफ द बैक बटन. करेंट आइटम टाइप है शेल आइटम का, जो क्या करता है? करेंट सेलेक्टेड आइटम. जब भी कोई आइटम हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या हिट होगा? करेंट आइटम. करेंट पेज मतलब करेंट पेज वो पेज टाइप का होता है. करेंट स्टेट इज अ टाइप ऑफ शेल नेविगेशन स्टेट. करेंट नेविगेशन स्टेट ऑफ सेल. ओके. करेंट ऑफ टाइप सेल टाइप है उसका. करेंट इज अ टाइप ऑफ सेल. अ टाइप कास्ट अलायस एप्लीकेशन डॉट करेंट डॉट मेन पेज. तो जब भी आपको मेन पेज का इंस्टेंस चाहिए, सिंपली कॉल करेंट इफ़ यू आर यूजिंग शेल. ठीक है, दैट्स अ वन थिंग. नेविगेशन इज फॉर्म्ड बाय इन्वोकिंग द गो टू async मेथड फ्रॉम द शेल. What is navigation is formed by invoking the go to async method. Routes. Navigation is performed in a cell app by specifying a URI to navigate to. Navigation URI can have three components: a route, a page, or one more query parameters. Route, which defines the path to content that exists as part of shell visual hierarchy. Route क्या है? जो क्या करता है? Which define the path to the content that exists as a part of shell view visual hierarchy. A page that don't exist in the shell view hierarchy can be pushed onto the navigation stack from anywhere within the shell app.
For example, a details page isn't defined in shell view hierarchy, but can be pushed onto the navigation stack as required. ठीक है. One or more query parameters. Query parameters are parameters that can be passed to the destination page while navigating. When a navigation URI includes all three components, the structure is route, then page, then query parameters. The route is the part to defines a path to content that exists as a part of shell visual hierarchy. Page does not exist in the shell visual hierarchy, can pushed onto the navigation stack from anywhere within the shell app, and then query. तो routes के तीन क्या होते हैं, components होते हैं, route, page and query parameter. Registered routes. Routes can be defined on flyout item, tab bar, tab, shell content, objects to their routes. Okay, flyout route, shell content. Okay, routes can be defined on flyout item, tab bar, tab, shell content object through their routes property. तो सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर द राउट. तो शेल के अंदर फ्लाई आउट आइटम है, फ्लाई आउट आइटम के अंदर राउट हमने लिखा एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. एंड देन शेल कंटेंट, फिर उसके अंदर लिखा है राउट मून फेज सनराइज. ठीक है. टू नेविगेट टू द मून फेज राउट, द एब्सोल्यूट route URI is astronomy slash moon phase. Okay, register routes. Register details routes. In the shell subclass constructor or any other location that runs before a route is invoked, you can explicitly register a route by using routing.register route method for any detail space that aren't represented in shell visual hierarchy. Okay, routing dot registered route. Okay, it's a string and it's a key. तो हमने क्या किया है, रजिस्टर किया है राउट को. To navigate to the astronomical body page, one would then invoke await shell.current.goToAsync astronomical bodies. Okay, in a shell subclass constructor or any other location that runs before a route is invoked, you can explicitly register a route by using the routing.register route method. Routing.register route method for any details page that aren't represented in the shell view hierarchy. ठीक है. जैसे एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स पेज इसमें नहीं है, बट हमने रजिस्टर किया है कहाँ से, या तो शेल सब क्लास कंस्ट्रक्टर से या अदर लोकेशन दैट रन्स बिफोर अ राउट. ठीक है. टू नेविगेट टू द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, वन वुड देन इन्वोक शेल करेंट इन्वोक. इस तरीके से भी हम इसको इन्वोक. बैकवर्ड नेविगेशन कैसे करेंगे, बैकवर्ड नेविगेशन कैन बी परफॉर्म बाय स्पेसिफाइंग डॉट डॉट एज द आर्ग्यूमेंट टू द गो टू असिंक मेथड. जैसे कि अवेट शेल करेंट गो टू असिंक में यदि मैंने दो डॉट लिखा है, मतलब वो बैकवर्ड नेविगेशन होगा. यदि दो डॉट की जगह कोई नाम लिखा है, फॉरवर्ड होगा. पासिंग डेटा. Primitive data can be passed as a string-based query parameters. When performing URI-based programming navigation, pass the data by appending after a route, followed by a query parameter and a value. String celestial name moon shell.current go to async dollar and then pass the dynamic name. Dynamic name भी pass कर सकते हैं. Pass the data by appending question mark after a route followed by a query parameters is equal to another value. ठीक है. So passing data. In this example, the route is astronomical bodies details. The parameters is body name
and the value is from the variable celestial name. Retrieving data. Navigation's data can be received from decoring the receiving class with the query parameters attribute for each string-based query parameter and object-based navigation parameter. Retrieving the navigation data can be received by decorating the receiving class. Query property name of astroname body name. Public partial class astronomical body content page. This is string property. Query property attribute for each string based query parameters. Query property attribute for each string based query parameters. For each string based query parameter and object based navigation parameter. Okay. In this example, the first argument for query property attribute specify the name of the property, कौन सी property है, and that receive the data. With second argument, it specify the parameter ID. Check your knowledge. How do you send data to a page when using .NET MAUI shell route based navigation? Pass the data into constructor, initiate the page, set page level property, use the query syntax key value. You can use a query string syntax to send data between pages. Use tabbed pages with navigation. Okay, tabbed pages navigation. In this astronomy app, you are asked to add pages that enable the users to select different astronomical bodies. Let me show you these bodies. This is. There can be any number of bodies, so creating a tab for each body isn't feasible approach. Therefore, to enable user to select which body to view, you decided to add another page containing a list. The user can select a body from the list and the app display the details for the body in a new page. Okay, the list page act as a root page for stack navigation. You add the list page as a tab in the existing user interface. Okay, open the starter solutions. Okay, so what we have to do is we have a app cell. Let me go back to the app cell.xaml.cs. Okay, so app cell constructor में हम क्या लिखेंगे? This is the constructor. App cell constructor. We have to go to app cell constructor. This is app cell constructor. उसके अंदर में हम लिख देंगे initialize component के बाद routing register route astronomical body type of astronomical bodies. Okay, navigate to the details page. अब हम क्या करेंगे, बॉडीज पेज के अंदर में जाएंगे. यहाँ पे हमने बना दिया काफ़ी. ये होना चाहिए कोड के अंदर, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क. दिस इज देयर. Whenever a button clicks, the app navigate to the astronomical body page, but we still need to send the type of astronomical body to display.
To send the data to astronomical body page, add a query parameters. देखिए क्वेरी पैरामीटर्स हमें ऐड करना पड़ेगा. इसकी जगह हमें से क्वेरी पैरामीटर्स हमने यूज़ किया कमेंट और इसको रिफैक्टर कर दिया मैंने. ठीक है. टू नेम टू रिसीव द डेटा on astronomical body page, first create a class level, okay, property to hold the incoming data name called astroname. So astronomical body page हमने बना रखा है. उसके अंदर में हमने क्या बना रखा है कि एक एस्ट्रोनेम करके प्रॉपर्टी होगी. नहीं है, बना दो. ठीक है. अपडेट्स यूज़र बॉडी. ठीक है. इसका क्या प्रॉब्लम है, ये सब तो है यहाँ पे. प्रॉब्लम पता नहीं, आई डोंट नो दिस प्रॉब्लम. हियर इज़ द अपडेट एस्ट्रोनॉमी बॉडी इज़ अ हेल्पर फंक्शन. ठीक है. दिस इज़ द हेल्पर फंक्शन जहाँ पे ये पास हुआ. फर्स्ट एस्ट्रो डेटा जिसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, किसी से मैच हो रहा है क्या. कि वो मैच होता है उसका रिटर्न टाइप बॉडी आएगा. बॉडी डॉट नेम से टाइटल बन जाएगा. बाकी हम क्या करेंगे, उसे पास कर देंगे टेक्स्ट में. Then you need to decorate the class with the annotation that maps the incoming query to the properties. Okay, so ये जो astronomical body page है इसको हम query parameters query property लगा देंगे इसमें. Start the app and select the bodies. We'll see. जैसे मैं अर्थ को क्लिक किया, क्या आया, डिटेल्स अर्थ की, मास, देन मून, सन. ओके. ये बैक बटन की तरह काम कर रहा है. Got it, right? बैक. तो समझते हैं थोड़ा सा क्या है कोड में. तो हमने दो क्लास बनाई. एक बनाई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज पेजेस जिसके अंदर में हमें 4 आइकॉन दिखते हैं. ठीक है. और ये चारों क्या है, एक बटन है. दीज आर बटन्स. अब ये जब बटन प्रेस होती है तो एक इवेंट है, सब बटन का एक इवेंट होता है, राइट. अब उस इवेंट से क्या हो रहा है, जब भी वो इवेंट हिट होता है तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पेज में राउट कर रहे हैं. अब राउट करने के लिए हमने क्या किया, शेल करेंट डॉट गो टू असिंग और उसके अंदर क्वेरी पैरामीटर लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी डिटेल्स. ओके, बॉडी डिटेल्स एस्ट्रो नेम कॉमेट अर्थ एंड मून. ओके. अब ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी डिटेल्स, ये कहाँ से आ रहा है, तो इसको समझते हैं. यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी पेज, लेट्स सपोज यदि मैंने एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी डिटेल्स जो लिखा है और कॉमेट लिखा है नाम, राइट. इसकी जगह यदि मैं सिर्फ
फॉर्मेट लिखता तो क्या होता? जस्ट अ मिनट। ओके, अर्थ को भी वैसे कर देते हैं। रीरन इट। एक्चुअली यहाँ से हिट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हिट somewhere else। एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। कि अनेबल टू फिगर आउट द राउट अर्थ, क्योंकि उसमें हमने बॉडी पास नहीं की है प्रॉपरली, तो उसको अर्थ नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी डिटेल्स क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है, बैक टू दी वेबसाइट्स, तो to navigate to the astronomical body you need to set up a route by registering it in the constructor। तो ये जो डिटेल्स वर्ड है वो कहाँ पे ऐड है? कंस्ट्रक्टर में ऐड है। किसके? सेल के। तो ये जो बॉडीज़, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में ऐड कर रखा है पेज को। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, देन राउट करना है एस्ट्रो नेम। और ये एस्ट्रो नेम कहाँ से आ रहा है? क्यूरी से आ रहा है, ये वाला क्यूरी पैरामीटर एस्ट्रो नेम, ठीक है। लेट सपोज यदि मैंने इसको हटा दिया, क्या होगा देखते हैं। बैक टू दिस बॉडी, यहाँ पे ये चलेगा कि नहीं? देखो, ये नेविगेट तो हुआ मगर डेटा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? विल सी, आई टेल यू। इसमें सबके लिए एक ही लेआउट आ रहा है। नेविगेट हो रहा है क्या? एक डिफ़ॉल्ट पेज में, डिफ़ॉल्ट पेज मतलब बॉडी पेज में हो रहा है नेविगेट, ठीक है। हमने क्या किया है? क्वेरी पैरामीटर्स नेम ऑफ एस्ट्रो नेम जो हमने बनाया है, ठीक है, एस्ट्रो नेम पे ये पास नहीं हो रहा, क्योंकि लेट मी शो यू अगेन। जैसे मैंने हिट किया, ये यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है हमारे पास कोई। अंडरस्टूड? हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये हिट नहीं हो रहा है। क्या पेज हिट हो रहा है क्या? तो पेज हिट हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर हिट हुआ? हिट होने के बाद हो, मतलब ये प्रॉपर्टी हिट नहीं हो रही है एस्ट्रो नेम जो हमने यहाँ बनाई है। और एस्ट्रो नेम को हमें क्वेरी प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। क्वेरी प्रॉपर्टी एस्ट्रो नेम। लेट मी undo this, rerun it।
अभी क्या होगा, जैसे मैंने अर्थ पे क्लिक किया, कहा है एस्ट्रो नेम पे आया। कैसे पता चला यहाँ पे आया? बिकॉज ऑफ एस्ट्रो नेम इज रजिस्टर्ड अंडर द क्वेरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और जब भी हम इसे हिट करेंगे, एनोनॉमिकल बॉडीज डिटेल कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो यहाँ रजिस्टर आउट में है। ठीक है, एज अ टाइप ऑफ दिस पेज। ठीक है, इसके की को हमने यहाँ पास किया गो टू असिंग मैच। तो सबसे पहले हमने क्या पास किया, यहाँ पे राउट पेज पास किया। ठीक है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर क्योरी पैरामीटर्स इज इक्वल टू कॉमेट। अब क्या होगा, जैसे ही वो इससे रजिस्टर्ड है, राइट, तो ये नेम ये स्ट्रिंग में आएगा एज अ नेम अर्थ, और वो किसको हिट करेगा, अपडेट एस्ट्रो बॉडी को। ठीक है, जैसे ही वो बॉडी को हिट करेगा यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, एज, सरकमफेरेंस, इमोजी, अकाउंट, मास, नेम, और फिर इसको फीड कर देंगे अपडेट व्यू को अपडेट कराने के लिए। नाउ इट इज शोइंग। ओके, इन दिस वे सी। Now summary is implement flyout navigation। हमने इस सेशन में सीखा कि इम्प्लीमेंट किया है फ्लाईआउट नेविगेशन को, इम्प्लीमेंट टैब नेविगेशन और नेविगेट बिटवीन पेजेस एंड टैब्ड। So this is something we learned in this module। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोर लोकल डेटा विथ सिक्वेलाइट इन .NET MAUI, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक एज अ मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि जितना भी एप्लीकेशन है सब में डेटा होता है और विच इज़ नीड टू बी स्टोर इन सिक्वेलाइट। तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होते रहूँ और कुछ अच्छी चीज़ें लाऊँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अभी शुरू के कुछ वीडियो ऐसे हैं कि जिसमें थियोरेटिकल ज़्यादा है, बट नेक्स्ट लेटर फ्यू आफ्टर दिस मॉड्यूल विल पिक द random applications and try to explain it what we can do best. Okay, so that's all for now. Thank you.